Good morning, my dear students and dear parents who have joined and supported our various tips and innovative for kids. How are you all? I hope you all are fine and safe with your family. So, this is the day one of your summer camp. We have planned so much for you. We will enjoy, learn new skills, and explore and develop your self confidence too. Okay, so I'm hoping that all our students are going to do this activity and parents will help them too. So I'm requesting all the parents to help their kids to do all the activities, and please help your kid to do all the activities. But yes, in this pandemic situation we can't arrange the physical summer camp, but we will do and learn it through online. Okay, so hope you are going to enjoy this summer camp and learn new things. So I'm hoping that all will be enjoy these activities. So let's start today's fun. Okay, and today I will be teaching you doodling. Okay, you all are aware of doodling or not? I hope कि आपको पता नहीं होगा कि doodling क्या है, but we will do this fun activity today. So let me set up my table, then I will coming back. You know, students, what is doodling? Actually, doodling is it is a kind of drawing of lines. आप ऐसे लाइन खींचते हो जो, ठीक है, any patterns, square, circle, triangle, okay, any patterns, and without thinking you can do it. And doodle doesn't need to be perfect. ये perfect नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगर आप एक हाथी का डूडल बना रहे हो, उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा परफेक्ट हो, ठीक है. सो इट डजेंट नीड टू बी परफेक्ट. इट इज़ द कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, एंड यू कैन डूडल एनीथिंग. ओके, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं लाइक फ्लावर्स, एनिमल्स, वर्ड्स ऑल्सो यू कैन डूडल. सो टू स्टार्ट डूडलिंग फास्ट वी मस्ट लर्न टू ड्रॉ बेसिक शेप्स. यू नो दैट बेसिक शेप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपके सर्कल, देन स्क्वायर, ट्रायंगल, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल द शेप्स. इसे बार बार आपको करना चाहिए. सो टेक आउट योर पेंसिल and drawing copy and you just need a pencil as you are beginner, so you use a pencil. I am using here a pen. It is a black gel pen. So I will suggest you that you use a pencil and trace the outline with a pen thereafter. Okay, so first start drawing ऐसे circles बनाओ, then after that ऐसे squares, and make sure कि ये one stroke में होना चाहिए. ओके, जैसे कि ऐसा एक बार, फिर देन ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, वन स्ट्रोक में आपको ये करना होगा. ऐसे स्क्वायर, देन लाइंस, आपको ऐसे लाइंस दिस वे. ओके, देन ओवर एंड ओवर, ऐसे सिर्फ एक करके आपको नहीं बैठ जाना है, ऐसे आपको पूरा प्रैक्टिस करना है एक के बाद एक. First you will need to learn all the shapes. इस तरह का. ओके, एंड यू ऑल्सो ट्राई हार्ट शेप. ओके, देन वाटर ड्रॉप, then star,
इस तरह का प्रैक्टिस करोगी. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द क्लाउड शेप. Okay, then ट्रेसिंग लाइन, ब्रोकन लाइन्स, डॉटेड लाइन, वेव स्पायरकल्स, ये सब भी आप कर सकते हो. जैसे ब्रोकन लाइन भी आप कर सकते हो. देन डॉटेड लाइन. ओके, देन ऐसे स्पायरकल्स. you have to practice all these shapes and lines to do the doodle. okay, इस तरह का ये सब. when you will combine all this shape you will get a nice doodle. like do like this to enhance the beauty of this doodle. Then connect with this. Like this you can connect all the shapes and you can get a nice doodle. okay, so here is an example of how you can doodle using a shape. like now I am taking a triangular shape. okay, this way first draw the basic shape like this triangle. Then add a line like this and add some circles and some squares. Here is your pizza doodle, isn't it? Please you also draw with me, but you use a pencil. okay, now I will use the circle to draw a doodle of elephant. first you take a pencil ऐसे circle और एक circle. then it is this middle one. then trace here. ऐसे आउटलाइन में आपको ट्रेस करना है. and add here another line. So here is a nice elephant doodle. Okay, so in this way we can use our several shapes to doodle anything. So try this and have fun.